Hey everyone. All right, we'll quickly begin the session. Just waiting for a couple of minutes. Can you tell me in the chat how was your exam? I have seen the question paper initially, and I can safely say that the question paper was quite easy. Hello Tushar, hi Vijay. Hey guys. So we'll begin in a minute, but you can let me know in the chat if the question paper was difficult. आपने ये सब questions पहले देखे थे या नहीं देखे थे? In yesterday's session, there were about 10 or 15 questions जो आए थे, and from previous year questions जो subjective type, objective type थे, I think आपने वो भी सब देखे होंगे. Not a single question was there जो आपने नहीं देखा होगा पहले. CBSE checking is not strict. If you know the answer, अगर आपके एग्जामिनर को लग रहा है कि आपको आंसर आता है, you will get marks. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में 2, 3 या 4, 5 लाइन लिखनी पड़ेगी. अगर आपका पॉइंट करेक्ट है, then you will get marks. Easy, right? So let's look at the first question. Dash refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of withstanding stressful situations. इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को मैनेज करना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट. यहाँ पर ये रैंडम ऑप्शंस गलत थे सारे. Which of the following is not a benefit of stress management? बेनिफिट कौन सा नहीं है? So this is positive, this is positive, this is also positive. So ये आपका right answer है. Reduces efficiency होना चाहिए. Dash are computer programs that can damage the data. I think सिर्फ इतना ही पढ़ के आपको आंसर आ जाना चाहिए था. Viruses is the correct answer. ये आपका ICT स्किल से है. Dash is a horizontal bar present at the bottom of Windows 7 desktop. Now Windows 7 हो सकता है, Windows 10 हो सकता है, Windows 11 हो सकता है, XP हो सकता है, does not matter. The bar which is present at the bottom is called the taskbar. We had discussed in ICT session yesterday, if you remember. State whether the following statement is a myth or reality. Myth है या reality? Entrepreneurs are born in a certain way. आपको ये देखना पड़ेगा कि what is the statement saying. ये statement बोल रही है कि entrepreneurs बचपन से ही एक certain way में पैदा होता है. So which is actually wrong. They are also humans. They are not superhumans. So this is a myth. Which one of the following is not true for entrepreneurs? कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है entrepreneurs के लिए? They create needs and demands. They provide raw material. They do not create jobs. They help society by supporting infrastructure development. All right, so now this question is a bit weird. You mean to say that this is true? They create need and demands. They actually solve. So this is not true. They provide raw materials. This is also not true. Entrepreneurs do not provide raw materials. So also this is also not true. So what is it? So all of them look wrong, but अगर आपने C mark किया then it's okay, but ये question looks a bit confusing because the options are not right. So I do not know what CBSE will do about it, but अगर आपने ये mark किया then it's okay. ये दोनों भी mark किया then also it should be okay. Dash controls all aspects of a paragraph's appearance. Paragraph's appearance लिखा है. So कौन से स्टाइल की बात हो रही है यहाँ पर? Paragraph style. How many levels of headings does open office writer evaluate to? So जो heading 1, heading 2, heading 3 होती है आपकी जाती है total 10 तक. So C is the answer. So since this is single option correct,
आपको सिर्फ एक ही आंसर मार्क करना है, आपने अगर कोई दूसरा मार्क किया होगा इट विल बी रॉन्ग. रीमा हैज क्रिएटेड अ पैम्फलेट ऑन टूर टू वेस्ट इंडिया. She has inserted many images to make it presentable, but the size of the images is occupying a lot of space. So her friend suggested कि वो अपना जो size है images का वो छोटा कर सकती है. Which of the following options will help her in doing the task without losing any content of image? Recolor, docking, resize or rotate? C is the correct answer. Which of the following graphic filter is used to increase the contrast of an image in a document? Contrast increase करते आप कैसे हो? This is kind of a filter. If you use Instagram, Facebook अगर use करते हो तो image editing में आपको sharpen option आता है. I think most of you might have left this, but जिन्होंने नहीं छोड़ा है, this is the correct answer. Which of the following is not used when creating a mail merge document? So spreadsheet होता है आपका जहां पर आपका डेटा सोर्स है, डेटाबेस भी है आपका. एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी विच वन ऑफ देम इज नॉट यूज्ड? पेंट इज डेफिनेटली नॉट यूज्ड. स्प्रेडशीट यूज होता है, डॉक्यूमेंट यूज होता है, बट डेटाबेस आई डू नॉट नो. यू कैन यूज डेफिनेटली. सो पेंट इज द राइट आंसर. A colored border with dash appears around a cell where changes are made in a shared worksheet. A dot in the upper left hand corner, a dot in the lower left hand corner, a cross in the upper left hand corner, a cross in the upper right hand corner. Can you let me know the answer to this? This was not covered in our sessions. So if you use Google Sheets, the cross comes in the bottom right or the top right. So D is the correct answer. So you can actually discuss this further. I'm not very sure about the answer to this. So आप ये छोड़ सकते हो अभी के लिए. You can Google that. Dash feature adds data arranged in a group of cells in Calc with labels for columns and or rows. So subtotal is the correct answer. यहाँ पर डेटा ऐड हो रहा है फॉर अरेंज्ड ग्रुप. आपका डेटा ऑलरेडी ग्रुप्ड है, आप उसको ऐड कर रहे हो. सो सबटोटल इज द करेक्ट आंसर. A dash refers to the cell or a range of cells on a worksheet whose data values can be used in a formula. So अगर आप लिख रहे हो A1 to A5, this is called cell reference. बेसिकली सेल का एड्रेस होता है ये. सो C is the correct answer. Dash feature of calc is used to test what if questions. So हम लोगों ने देखा था कल what if scenarios होते हैं. So C is the correct answer to this. Macros are especially useful to dash the same way over and over again. So macros क्यों यूज होते हैं? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं स्टेप्स, which means we make repetition of a task easy. Reject a task नहीं होगा, comment a task भी नहीं होगा, report a task भी नहीं होगा. Dash feature of calc helps to track data, what was changed, when the change was made and who made the change. मतलब कौन changes कर रहा है. So edit record नहीं है, macro नहीं है, change record भी नहीं होगा. It is record changes. You can record your change कि किसने changes किए हैं. So A is the correct answer. Which one of the following is not an example of DBMS? अगर आप ऑलरेडी ओपन ऑफिस यूज करते हो तो आपको पता है इम्प्रेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होता है. सो दिस इज द राइट आंसर. Dash is an interface in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly. So इसमें अगर आपको confusion था, you just have to say कि user क्या कर रहा है. View, enter and change data directly.
विदाउट यूजिंग अ क्वेरी, उसको क्वेरी यूज करनी नहीं पड़ रही है. सो फ्रेम नहीं है, रिलेशन नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, फॉर्म होता है जिससे आप चीजें इनपुट कर सकते हो. Which of the following is expanded form of SQL? Can't think of an easier question than this. What is the correct answer? Dash is usually suitable for less amount of data. So एक relational file होती है, एक flat file होती है. We had discussed कि relational file तब use होती है जब आपको बहुत ज़्यादा data use करना हो. तो correct answer is flat file. This is the correct answer. Binary data types in a database can be used for storing. Binary data type मतलब 10110000. So the correct answer is photos, music files, etc. A would be the correct answer. Dash clause can be used with select statement in SQL to specify the rows to retrieve from the table. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सेलेक्ट स्टेटमेंट तो यूज करते ही हो, बट आपको वो रोज सेलेक्ट करनी है, स्पेसिफाई करनी है जहां से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. सो बेसिकली अ कंडीशन मतलब वेयर. Dash is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities. जो देख नहीं सकते या उनके ब्रेन में कुछ इशू है, सो उनके लिए कौन सी चीज़ डिजाइंड होती है. सो सबसे पहले इफ यू आर नॉट एबल टू सी देन यू नीड टू हेयर द थिंग्स. सो टॉगल कीज वुड बी द राइट आंसर. आपने क्या लिखा है? कैन यू पोस्ट द आंसर इन द चैट? स्टिकी कीज नहीं हो सकता है, साउंड की नहीं हो सकता, साउंड की कुछ नहीं होता, साउंड अलर्ट होता है. फिल्टर कीज फॉर इफ योर हैंड इज शेकिंग तब यूज होता है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द टॉगल कीज. नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क्स. नाउ हम लोग नेटवर्क की बात करें, देयर आर ओनली टू टाइप्स. एक होता है पीयर टू पीयर जहां पर सारे डिवाइसेस इक्वल होते हैं, whereas एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो डी इज द करेक्ट आंसर. Dash provides internet access by transmitting digital data over the wires of local telephone network. So इंटरनेट एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? DSL आंसर होता है वो, मॉडम नहीं है. मॉडम डज नॉट प्रोवाइड यू एक्सेस, इट जस्ट कन्वर्ट्स द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा. A dash is an unplanned event that may happen all of a sudden and may lead to unwanted or unprecedented results or outcomes. So please answer in the chat. Let's see what you have marked in your question. So illness नहीं हो सकता है, hazard नहीं हो सकता है, between emergency and accident. So within this, accident should be the correct answer because emergency does not happen, emergency is declared, and accident happens very suddenly. So C is the correct answer, but please confirm once with your textbook or the notes. But according to me, C, accident is the correct answer. Please write down the answers in the chat so that I know what you guys have marked. A dash worker will always perform to the best of his ability. Fast working, highly educated, happy and healthy और stressed. सो कौन सा वर्कर हमेशा बेस्ट परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी? यहाँ पर दिस इज द मेन वर्ड. उसकी एबिलिटी है थोड़ी, राइट? इफ ही कैन डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, हाउ कैन ही परफॉर्म हिज बेस्ट? सो इट शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी. इफ यू हैव मार्क्ड हाईली एजुकेटेड, यू मीन टू से कि वो अपनी एबिलिटी इंक्रीज कर रहा है. सो दैट इज नॉट आस्क्ड. अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर.
डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. आपको पूरी जगह खाली करनी है बहुत जल्दी. सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? आपकी स्कूल में भी होता होगा, मॉक ड्रिल्स होती हैं, बट उसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन इज द करेक्ट आंसर. Moving on to the subjective type questions, but before we start, if you are planning to take IP informatics practices in your class 11th, अगर आप AI लेने का प्लान कर रहे हो in your class 11th or maybe CS, please you can follow me on this channel where I'll be posting some stuff for each of these. And if you are not planning to take these subjects, then probably I wish you all the best. I'll see you around. All right, so let's look at this question. What is self-awareness? Self-awareness means you know about your good habits, your bad habits, your strengths and your weaknesses, right? आप अपने वर्ड्स में डेफिनेटली लिख सकते हो. आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं. वेरियस वेज यू कैन राइट दैट. Also give two benefits of self-awareness. You can be independent, right? You can perform to your best. Also there can be many other answers. Please write down in the chat. Artificial intelligence का भी question paper solve किया जाएगा after this in a different session. Give one example each of following stress causal agents for students. Mental, all right. And social. Let's talk about exams. Social, maybe less interaction. Staying at home. Or maybe too much interaction. Right, so moving on to the next one. Differentiate between files and folders. ऐसे का ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ गया कल जो हम लोगों ने रिविजन सेशन में देखा था. सो फाइल्स एंड फोल्डर्स में बेसिक डिफरेंस, सेम टाइप ऑफ डेटा होता है. फोल्डर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो सकता है. फाइल्स में एक्सटेंशन होते हैं एंड में, जैसे डॉट JPG होता है, डॉट PDF होता है, whereas फोल्डर्स में कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होता है. There are various other things you can write, but I hope you have covered yesterday's session. Give any two qualities of successful entrepreneur. He manages time very well. He is a risk taker. He is a leader. इनमें से कुछ भी लिख सकते हो. Also बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं. Everyone who's from AI, please stop commenting here. This is IT 402. इसके बाद AI का सेशन होगा, वहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. राइट नाउ दिस सेशन इज ओनली फॉर IT 402. गिव एनी टू प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. कैन यू आंसर इन द चैट? There can be many functions. So promotional can refer to how do you improve your business. There can be many ways. आप बिजनेस कैसे इंप्रूव कर सकते हो. अरेंजिंग फंड्स, मे बी पब्लिसिटी, न्यू आइडियाज. राइट, ये मेरे अपने वर्ड्स हैं, बट यू कैन टॉक अबाउट क्रिएटिविटी. पब्लिसिटी में मार्केटिंग आप लिख सकते हो. अरेंजिंग फंड्स में डेफिनेटली अरेंजिंग कैपिटल. So if you left that question, that's completely okay. It was kind of a bouncer. Differentiate between keep scale and keep image option size while cropping an image in the document. All right, I will explain it to you using a diagram. So ये आपकी image है, ठीक है. यहाँ पर probably there is a sun and यहाँ पर there is a there is a fish. Okay, so if you resize the image, ये same image resize होके छोटी हो जाएगी थोड़ी साइज में, बट
ये जो सन और ये जो फिश है यहाँ पर ही रहेगी, बट इफ़ यू क्रॉप इट लाइक दिस, आपने इतना क्रॉप कर दिया, सो इमेज ऐसी हो जाएगी. सो यू कैड हैव रिटन दैट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर. सो एक्ट्स एज अ blueprint, can create many documents of the same style. ठीक है. आपने अगर कुछ और लिखा है इवन देन इट इज ओके, बट इन लाइंस पे ही होना चाहिए. Why do we need to merge worksheets? So if we have user 1 and user 2, जो इनके changes होते हैं, we have to merge into one main worksheet, right? To remove duplicates, to keep data consistent. अगर आपने इस पे से कुछ भी लिखा है, then it will be right. What is a primary key? How is it different from foreign key? Now primary key हम लोगों ने देखा था, it is a unique key which identifies a record in any table or a database. How is it different from a foreign key? A primary key is a foreign key in a different table or a related table. अगर आपने दोनों के डेफिनेशंस भी लिख दिया इवन देन इट इज ओके. अगर आपने एक डायग्राम बनाया है देन ऑल्सो इट इज ओके. Expand and explain the term WAN. It stands for wide area network. Now wide area network connects devices across the country or large areas. Speed ranges from probably 1 Mbps to 10 Mbps. अगर आपने ये भी लिखा है then it's also okay. बट अगर आपने सिर्फ इतना भी लिखा है then also it is okay, because इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, इसका आपको दूसरा मार्क मिलेगा. Identify the following network और इंटरनेट कनेक्टिविटीज एज वायर्ड और वायरलेस. आपको ये मेंशन करना है कि वायर्ड कौन सा है एंड वायरलेस कौन सा है. सो डायल अप होता है वायर्ड बिकॉज टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है. WiMAX is wireless. How many of you got this right? You can put a thumbs up. Give any one feature of instant messaging. Do I need to tell you this? Video call, chat history, encrypted messages. You can talk to your friends. आप कुछ भी लिख सकते हो for instant messaging in your own words. Explain the following terms with respect to positioning the graphics in a document. सो अरेंजमेंट क्या होता है हम लोगों ने कल देखा था. इफ यू अरेंज और प्रोबेबली स्टैक इमेजेस ओवर वन अनदर, तब हम लोग उसको अरेंजमेंट बोलते हैं. वेयर एज टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द प्लेसमेंट एंड फ्लो ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज. ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था कल. ऐसे हो सकता है आपका टेक्स्ट रैपिंग या फिर ऐसे हो सकता है. वेयर एज एक इमेज ऊपर हो सकती है, दूसरी इमेज नीचे हो सकती है एंड वाइस वर्सा. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट्स. नाउ आपको ये पार्ट तो आपने कर लिया होगा. आई होप यू वर ऑल्सो एबल टू आंसर दिस पार्ट. Were you able to answer the B part? Please put a thumbs up if you were able to do that, because it is not difficult. You just have to use some common sense. So relative and absolute hyperlink. Absolute hyperlink stops working if you move the file. Relative hyperlinks only stops working when the relative position of the files is changed. Internet hyperlink gives a page or a file on internet, whereas a document hyperlink gives you a file in your system. Good to see that so many people were able to solve this one. File in your system हो सकता है.
I just use common sense. Yes, that's what you had to use. Explain any four data types of DBMS. बहुत सारे data types है. Integer, decimal, binary, boolean. कौन सा रह गया? Text. Now you can give examples. Integer में 34, decimal में 34.1, binary में you can't give numbers, you can say image, video, etc. boolean में yes, no. text में ABCD. ना आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप इंटीजर में नंबर स्टोर करते हो, डेसिमल में आप डेसिमल स्टोर करते हो. वेरी इजी इफ यू गिव द एग्जांपल फर्स्ट, राइट. सो 1 मार्क इसका, सेकंड मार्क इसका. Structure of a table orders is given below. Suggest suitable data type of each column. ये सारे कॉलम्स दिए गए हैं आपको, आपको इनके डेटा टाइप्स लिखना है. नाउ डेटा टाइप आप कैसे गेस कर सकते हो? लुकिंग एट दिस, ये जो A101 है लुक्स लाइक टेक्स्ट डेटा टाइप. सो मे बी वी कैन राइट वेरिएबल कैरेक्टर. You can also write character, you can also write text. Order date, date data type. Customer ID, again where car text. अगर आपने यहाँ पर date time भी लिखा है then it is also right. Amount, if you see यहाँ पर decimals है, so decimal भी लिखा है तो भी चलेगा, फ्लोट लिखा है तो भी चलेगा. कंसिडर द फॉलोइंग टेबल बुक्स. आपके पास बुक आईडी है, बुक का नाम है, ऑथर है, क्वांटिटी है एंड प्राइस है. राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3. वी हैव टू टू पार्ट्स, डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स जहाँ पर क्वांटिटी इज मोर देन 3. हाउ डू यू राइट इट? You can write the query in the chat. This is the first part. Second part is where QTY लिखना पड़ेगा आपको, quantity नहीं लिख सकते हो directly. You have to mention this greater than 3 and semicolon. As I've discussed, you need to write the semicolon. आपने अगर नहीं भी लिखा है then it depends on the examiner कि आपका मार्क्स कटेगा या नहीं. इफ इट इज ओके अगर आपने स्मॉल में भी लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर, बट ये जो QTY है आपको वैसे लिखना पड़ेगा. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर हाउ शी और ही डिसाइड्स टू गिव यू द मार्क्स. सो ये हो गया हमारा. डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक्स हुज प्राइस इज लेस दैन 500. सो अगेन दिस क्वेश्चन वॉज डन इन वन ऑफ द वीडियोज. डिस्प्ले करना है टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक्स एंड द सेकंड इज प्राइस इज लेस देन 500. सो आप कैसे कर सकते हो? यू कैन से सेलेक्ट. नाउ यहाँ पर तो आपका टोटल अमाउंट है ही नहीं. हाउ डू यू कैलकुलेट योर अमाउंट? सो अमाउंट का फॉर्मूला दिया गया है, क्वांटिटी इनटू प्राइस. यू जस्ट हैव टू मेंशन QTY. एस्टरिस्क होता है, क्रॉस नहीं लिख सकते हो, एसक्यूएल को नहीं समझ में आता है क्रॉस. इनटू प्राइस, ठीक है, फ्रॉम बुक्स. ऑलराइट, यहाँ पर भी आपको बुक्स करना पड़ता, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर कैपिटल लिख दिया था मैंने. फ्रॉम बुक्स. अगेन सेकेंड पार्ट इज वेयर प्राइस इज लेस देन 500 एंड सेमीकोलन. सो सुहाना, ये सारे सेट्स के लिए वैलिड है. आपके पूरा IT402 में हर जगह सेम सेट्स ही थे. I think with this we have finished the entire question paper. Now if you have any doubts you can ask in the chat, but it was basically a easy paper, not very difficult. 1 या 2 questions में आपको extra marks मिल सकते हैं because they were wrong. Now do you have any doubt in
any of the questions, please let me know in the chat. Please like the session so that other friends of yours are able to see the solutions. अगर आपकी क्लास में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई है IT402 वाले फ्रेंड्स एंड देर योर गुड फ्रेंड, you want to help them out, you can share the link with them. One question. If you want to connect with me on Instagram, my account username is Aakash7.7. You can connect with me there. I'll also be taking sessions for 11th standard also. So you can follow me. Question number 21. I do not know the question number 21. Can anyone tell me what was the question? All right, so let me just check if I have any other question with me जो miss out हो गया हो. I don't think any of the questions is missing. I think one is for visually impaired students. All right. So I know the question now. Sorry, my bad. I have missed one question. So question number 21, it was best practices for internet safety. All right. And the B was two falls and slips safety rules. Now, if you have not studied this chapter, even then, I think you should be able to solve this. Best practices for internet. Most common one, antivirus use करो, firewall use करो, strong passwords use करो, don't visit suspicious websites. Sorry for the bad handwriting, but anyways, I hope you understand the answers. And for B, falls and slips safety rules, put warning signs जहाँ पर भी पानी गिरा हुआ है. You can tie your laces. I'm not very sure about this answer, but there are multiple correct answers and आपने जो भी लिखा होगा, I hope that is right. अल्फ़ाबेटिकल लिख सकते हैं. हाँ, अल्फ़ाबेटिकल नहीं होता है पासवर्ड्स में, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है. अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना होता है आपको, अल्फ़ाबेटिकल नहीं. If you want an answer to any question, please let me know in the chat, but do not use the question number. Can't we write INT? All right, so with this, we have finished the entire session, the syllabus. Your entire class 10th is over. So I wish you all the best for your upcoming exams. Where did you get that shirt? So I can tell you that in the Telegram group or on the Instagram. My Instagram handle is Aakash7.7. Next up is AI417 in the next 15 minutes. Question 4 का 5 बताओ. I do not know what question you're talking about. अगर आप बताओगे कि उस question में क्या था, then I can probably answer. So I think most of your exam went very well. There is a poll which was conducted in the community. You can go vote there. So if you have not already liked the session, you can like the session so later on other people can also join in and look at the answering scheme. If you want to join the Telegram group, the link is in the community post जहाँ पर class 11th के लिए अब चीज़ें share होंगी.
And if you're not planning to take any of the technical subjects, I wish you all the best. But you can also connect with me for any preparation regarding IIT JEE. I'll try to help you out. You can connect with me on Instagram. I cannot help you regarding NEET, but if any question is related to physics, chemistry, mathematics, maybe computer science, programming, I will be able to help you out. Yes, muchas gracias, afición. All right, so we'll be ending the session in the next 2 minutes. Semicolon is necessary, but your entire answering scheme, आपके जो marks आएंगे, it actually depends on the examiner. Generally examiners थोड़े lenient भी हो सकते हैं अगर आपने semicolon नहीं लिखा है, आपने कोई चीज़ें miss out कर दी हैं. But if the examiner feels कि आपको आंसर नहीं आता है, आपने थोड़ा randomly तुक्का मारा है, then probably आपके marks कट सकते हैं. All right, guys. So let's end the session now. It was great solving all of your doubts. I hope to keep solving them in the future. So, see you in the next one.